बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने रेजिस्टिव एलिमेंट का भी किया था, इंडक्टिव एलिमेंट का भी किया था सर्किट में जब, और साथ ही साथ वहाँ इन केस ऑफ रेजिस्टिव एलिमेंट वी नोटेड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस and the current, that is the two varying quantity, that is V and I, they are in phase. While in case of an inductive circuit, we noted that the voltage and current, they are not in phase, but they differ by an amount pi by 2 or 90 degree. Means VL is leading the current by 90 degree, or the current I is lagging the VL by 90 degree. And here you see that in case of capacitive circuit, means that if only a capacitor is connected with the AC source. In the circuit, if there is only a capacitor and that is connected with a source, AC source, when the switch S is closed, charge begin to flow, and after some time you see that one plate of the capacitor is positively charged and other is negatively charged. But as it is connected with the AC source, so after half cycle the voltage reverses. That is, again the capacitor is charged in the opposite direction as it was charged before. यानी पहले जब एक प्लेट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, अब जब हाफ साइकिल के बाद ये पोलैरिटी चेंज करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल डीसी की तरह नहीं है। अगर आप इसको आम डीसी सोर्स से जोड़ें तो उसमें तो कैपेसिटर जो है एक साइड पॉजिटिवली होता है, दूसरा नेगेटिवली होता है, अल्टीमेटली मैक्सिमम चार्ज होता है, फिर चार्ज फ्लो बंद होता है। आपको किसी भी मतलब है कि इफ़ यू कनेक्ट कैपेसिटर विद द डीसी सोर्स यू कैन नॉट गेट अ कंटिन्यूस करंट, क्योंकि वो once it is maximum charge then the flow of charge becomes stop. While if you are desiring to get continuous current, you must connect AC source with the capacitor, AC source with the capacitor. Now what will happen? The sinusoidal voltage in this equation is given by V is equal to V naught sin omega t minus phi. When you see that, consider a circuit in which capacitor is connected to AC source. एक सर्किट लिया गया है बच्चों जिसको AC सोर्स से जोड़ा गया है, यानी आपके पास ये कैपेसिटर है और इसको AC सोर्स से कनेक्ट किया गया है। सपोज करंट फ्लो इस तरीके से है, ये एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, फिर ये पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव होगा, बैटरी अपना वो चेंज करेगा। आफ्टर हाफ साइकिल द वोल्टेज रिवर्सेस इटसेल्फ, द चार्ज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। द साइनोसाइडल वोल्टेज इज गिवन बाय V is equal to V naught sin into omega t minus phi. Here V is instantaneous voltage and V naught is maximum voltage. Omega is the angular frequency and phi is phase constant, phase angle. So V is equal to V naught sin omega t minus phi. But we know that in capacitive circuit, when the capacitor connected with the battery, there is a relationship between Q is directly proportional to V, or Q is equal to CV. C is called capacitance of the capacitor, and it is independent of E and C, and it only depends upon the geometry. C is equal to AF sin line divided by D, area of the plate of the capacitor, medium used and separation between the plates. Q is equal to CV. So putting the value of V in this equation, Q is equal to C V naught sin omega t minus phi. अच्छा, लेकिन करंट क्या है? सिंस करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q by T, dQ by dt is current. So dQ by dt will be equal to CV naught d by dt of sin omega t minus phi. And derivative of sin omega t minus phi is equal to
I is equal to, in this case, dk by dt is I c v naught omega into cos omega t minus phi. Now see here, in the two equations, one is I is equal to c v naught omega cos omega t minus phi. Yes, see this equation, I naught cos omega t minus phi. And here is V naught sin omega t minus phi. It means that both the varying quantity, that is V and I, they are not in phase. If one is getting maximum value, the other is getting minimum value. If the other is getting maximum value, the latter will be getting a minimum value. So they are not in phase like the resistor element, but they are out of phase. By how much amount it is out of phase? You can also write this equation, I is equal to I naught cos omega t minus phi. In this way, I is equal to I naught sin omega t minus phi plus pi by 2. अगर इसको खोलें तो आपके पास ये दोबारा आ जाएगा. तो यहाँ देखें, ये पाई बाई 2 अमाउंट पे लीड कर रहा है. कौन लीड कर रहा है? I. किससे? V से. From equation 1 and 2, it is seen that current leads the voltage by pi by 2 or 90 degree. या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि V जो है वो लीड कर रहा है कितनी अमाउंट पे? I से 90 डिग्री पे या पाई बाई 2 डिग्री पे. तो इससे मुराद ये हुआ कि if you have a capacitor circuit in which there is only a capacitor is connected with the source, then the varying quantities, that is V and I, they are not in phase, but they differ by amount of pi by 2, which is shown from the phasor diagram also. The phasor relationship shows in phasor diagram, as the phasor rotate counterclockwise, इस तरीके से जब घूमेगा, it is clear that I phasor leads VC by 1 quarter cycle. I आगे है और आपके पास V क्या है? पीछे है. अब हमने इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में बात करनी है. कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेसिकली ये अपोजिशन है, अपोजिशन अफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ charge, and it is represented by Xc, and it is represented by Xc. As we see that V is equal to, according to Ohm's law, Xc will be equal to V is equal to IR, R is equal to V by I, so X is equal to V naught divided by I naught. Here you see X is equal to V naught divided by I naught. But from that equation you see that I naught is equal to CV naught omega. So putting here Xc will be equal to V naught divided by C V naught omega. V naught cancel. Xc is equal to 1 over omega C, or 1 over 2 pi Fc. Xc is equal to 1 divided by 2 pi Fc. So it means that Xc, that is the capacitor reactance, depend upon if A is well as C. By varying the value of C or by varying the value of F, the capacitive reactance value is increased or decreased. And what is its unit? Ohm. Just like resistance, the unit of capacitance, in this case, unit of capacitive reactance, in this case is you see it is ohm. तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि जब हम किसी कैपेसिटर को AC सोर्स से जोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि ये इसमें जो V है और I है,
ये इन फेज़ नहीं रहता, बल्कि क्या रहता है, आउट ऑफ फेज़ रहता है बाई पाई बाई 2। जिस तरीके से आप इसकी वजह ये है कि कैपेसिटर जो है बेसिकली इट अपोजेस द चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, वाइल इंडक्टेंस जो है वो, या इंडक्टर जो है दैट अपोजेस द चेंज इन करंट। दैट इज़ वाई यू सी देयर कि वहाँ मतलब है कि करंट जो है वो लीड कर जाता है, वो वोल्टेज जो है लीड कर जाता है करंट से, और यहाँ करंट लीड कर जाता है किससे, वोल्टेज से। तो इस तरीके से गोया आप देखते हैं कि कैपेसिटिव एलिमेंट में ये वेरिंग क्वांटिटीज़ जो है ये इन फेज़ हैं या आपस में क्या है, आउट ऑफ फेज़ है। इंशाअल्लाह इसके बाद फिर